Good evening. Can we start? Good evening, ma'am. Yeah, can we start? Or we'll Uh, wait for a minute. It's 3:59. yes, ma'am. Just a second. Good evening. On our behalf of our President Dr. Subhasri Sarkar, Jamshedpur Sahodaya School Complex, I welcome you all, our resource person. Uh, Welcome, ma'am. And Thank now we you. start the session. Thank you, ma'am. Okay. So I think more than 400 participants on a wintry afternoon. So welcome to the next session, which is on deliberating on ethics and integrity. So I will begin by expressing my gratitude to the President, Dr. Subhasri Sarkar, to all the participants who have joined, to the admin, PSSC, the host, the co-host, and above all to the principals of the participating schools who have informed you and allowed you for today's session. As usual, the rules remain the same online. We will respond through chat box. Feel free. I'm sure all the teachers have become so digital, so techno savvy. Immediately they can respond. See, just now you've already proved the moment you joined on the link, you started putting messages, good evening, ma'am, affiliation number, your name, and things like that. So keep this energy preserved for lots of things, to lots of responses, which is going to come ahead. Are we ready? Either you put an R or you put a thumbs up. Are we ready? Either you put an R in the chat box, please. Neha Mishra, madam, has raised the hand. Madam, you can put your concern in the chat box. We will answer. Oh, so many of you are putting ready, ready, ready. Fine. And you're ready just at the right time. And a wonderful topic very close to my heart, deliberating on ethics and integrity. As usual, I always begin with introspection or point to ponder or something thought provoking or let us think together. So now let us ponder over the scenario. There'll be a picture and we will think about it and then we will respond in the link that is given. I repeat, the next slide will depict a picture. We all will see the picture together. Then I am putting a link where you all have to respond. And your response will decide the pace of the session today. So here comes the picture. Is the picture visible? Put a small capital Y if it is yes. Is the picture visible? Put a capital Y. Y for yellow. Yes. So it is Akanksha madam, Pallavi madam. Thank you so much for the response. Ashok sir, all of you. Why? So the picture is visible. Now there is some write-up about the picture. Just see this. Is integrity on the road to extinction? That means क्या integrity समाज से खत्म होने वाला है? क्या ये values, integrity is one of the value, ethics is one of the values. So क्या integrity, right or wrong, ये दुनिया से खत्म होने वाले हैं? Is it on the road to extinction? You have exactly 60 seconds to think and then you will respond on the link. So this is a poem. 60 seconds to think, then respond on the link. What do ethics and integrity denote, right? The question is, what do ethics and integrity denote according to you? So you, by the time you're thinking, only 35 seconds up. So let me check. A very inspirational. Thank you, madam. Let me, I have to share and copy the link and then put it on the chat box. All you have to do is click on the link and you start answering now. Yes, please. I can put the link again for you. Yes, Pataliputra Sahodaya will rock now. The link has gone the third time. Ma'am, how to join the link? Just click on the link, sir. अभी भेजा है ना लिंक, उस पर क्लिक करिए. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और उसमें ये प्रश्न आ जाएगा, व्हाट डू एथिक्स एंड इंटेग्रिटी डिनोट?
एथिक्स और इंटेग्रिटी से क्या तात्पर्य है? मॉरल प्रिंसिपल, सुपर. इंटेग्रिटी, वैल्यूज, ओनली ट्रूथफुल, right? A part of integrity is truthful, wonderful, a major part. आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं. You have every right to express all your thoughts, values, opinion. Righteousness, a wonderful thing. Why don't you put it on the Menti map? Wonderful. Okay. Pro and loss. Profit and loss is ethics. Values, moral inspiration, empathy, expression of gratitude. It denotes honesty for me. Absolutely. Whoever has written, wonderful. Because even I believe personally, honesty harasses, never punishes. If you agree with me, put an A in the chat box. Honesty harasses, never punishes. A in the chat box. Put an A. Yes, there are few people who are agreeing with me. And I acknowledge the departed soul of my previous school chairman where I've studied and started my career from. He always used to say this: honesty harasses but never punishes. Right? And so does my present boss. So honesty has become a system in the as a part of our working system now. Regulations. Okay, ethics, some of you feel regulations, okay. To some extent, norms. You mean to say norms? Do good when it is when on one is on watch. No, do good even when nobody is watching. Right. Yes, I think 2-3 responses more, then we will move on to the next one. Human behaviors, one's belief, education, virtues, discipline, thought process, absolutely. So Pataliputra Sahodaya complex simply rocks because so many responses we have got, right? What do ethics and integrity denote? So जो आपने लिखा है, whatever you have written, teachers in India and abroad think the same. So whatever you have written, I thought I should compile in the slide. Let me see, just a minute. So I go to the next slide. Yes. Right? Something like this, which came up, and you have all written. Yes, the clapping, the thumbs up is motivating me, but I'm not able to acknowledge with your name. ठीक है, अब देखते हैं what is integrity. Yes, means one should be, yes, between saying and doing, there should not be a gap. Let me see who has given such a wonderful answer. There should not be a gap between saying and doing. Superb, superb. Abha Kumari, madam. No difference between saying and doing. Absolutely, ma'am. So most of you have written, if you're writing your name and all, I don't think it is required, your name and email ID, we can respond because already the session has started. So let's see, what does integrity denote? Demonstrating sound moral and ethical principles and doing the right thing no matter who's watching. Right? अभी देखिए ना, एक उदाहरण देते हैं. ये 4 बजे का सेशन है. आपके प्रिंसिपल या एसटीएनसी ने आपका नाम एनरोल किया हुआ है. अब उन्हें थोड़ी पता चलेगा आप अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे. वो तो देखने नहीं आ रहे हैं या वो तो फोन नहीं करेंगे. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. एंड क्या होगा उसके बाद आप जाकर आप कहेंगे उनसे कि देखिए ना, आई हैव अटेंडेड बट माय सर्टिफिकेट इज नॉट जनरेटेड. राइट? Remember, teachers, all of you know about it. We'll just reiterate. आपके प्रिंसिपल्स या हम या आपके सुपीरियर्स या आप खुद बच्चों के साथ, we will see, hear and take a call. तो we are humans, गलतियां हो सकती है, but ये ऊपर वाले अकाउंट में कोई गलती नहीं. There is no imbalance, there is no error, right? When we throw an apple, apple comes back. When you throw an orange, orange comes back. Apple फेंकेंगे ऊपर, orange की उम्मीद नहीं कर सकते. So what we do, we get it for it, right? This is the reason why we say, let us do things right the first time, every time, even when no one is watching us. That is ethics. Ethics है वो आपके behavior से, आपके thought process से ज्यादा आपकी अंतरात्मा से जुड़ा है. Right?
You understand what is Antaratma? Introspection, inner self. Your inner eye, your inner self will tell you what is right, what is wrong, right? कई बार हम मजबूरी में गलती कर देते हैं, but if you are ethically strong, you cannot take it for a long time. The foundation on which co-workers build relationship and trust. अगर यदि आपका ethics में गड़बड़ हो, so do you think your colleagues will trust you? Yes or no? Why for yes and for no? If your colleagues, yes, if your colleagues think that there is some problem with the understanding with the ethics, nobody will trust you. तो क्या वो आपको बोलेंगे तुम ethically बहुत कमजोर हो? Will anybody say no? But their behavior towards you will reflect. ऐसे कई बार होता है, लोग गलत समझते हैं. People start spreading wrong news. That is also unethical. हमारे साथ एक सिचुएशन हो जाए और हम उसको एक नॉर्म बना ले या किसी के विषय में उसके बारे में बोलते जाए उसके विषय में कि ये ऐसे ही है. That's also very very unethical. All we see human beings, we always see the side, nobody sees the situation, right? People say sometimes you see अरे ये हमेशा लेट आती है, I don't know why the principal forgives him or whatever case may, right? Thank you for this. But the principal might be aware of the situation. So ethics is not for other people. अपने ethics अपने पास, अपनी अंतरात्मा की आवाज आप सुन सकते हैं, हम नहीं. हम देख सकते हैं आपके कार्यों से, right? Self-awareness, accountability, responsibility, truthfulness, as well as internally consistent actions, right? अभी आगे बढ़ेंगे ना, आपको ethical dilemma देंगे हम और आपसे प्रश्न करेंगे कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे. तो एक एथिकल डायलेमा अभी आपको देते हैं, ठीक है, राइट? आपके स्कूल में रिपोर्टिंग टाइम 7:30 है, कुछ इंस्पेक्शन होने वाला है, प्रिंसिपल ने बोला एवरीबडी हैज टू बी इनसाइड द स्कूल बाय 7:25, राइट? और आप दुर्भाग्यवश the same day you get up late, you have to finish with your children's tiffin and things like that, and then you reach at 7:35. Right? There is another teacher who reaches at 7:35 who has already informed the principal that he or she has to get something for this situation. Now, आपसे प्रश्न है, उस टीचर को आपके प्रिंसिपल ने अलाउ किया क्योंकि उन्होंने पहले से बात कर रखी थी और आपको अलाउ नहीं किया, आपको डांट पड़ी या एक्शन लिया गया. अब आप 1 मिनट का समय है, 1 मिनट बहुत होता है, 60 सेकेंड्स. 1 मिनट सोचकर बताइए जरा, एथिकली स्ट्रॉन्ग आप हैं या नहीं, और आपको क्या लगता आपके प्रिंसिपल ने जो किया वो एथिकली राइट है या नहीं. बट हैव द करेज, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिंसिपल एंड आई एम आस्किंग यू, मेनी अ टाइम टीचर्स मिसअंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, राइट? अब आप बताइए, what the principal has done, the principal must have penalized, कुछ बातें सुनाई होगी, या yes principal is correct, पर आप भी अपनी जगह करेक्ट है या नहीं वो बताइए. Yes, most of you are writing the principal is right, the principal has to inquire. और ऑनेस्टली आप बताइए तो उस सिचुएशन में आपको कैसा लगता है कि अरे कभी तो देर नहीं हुई थी, टुडे द विजिटर्स हैव नॉट कम, फिर भी हमने 5 मिनट देर हो गई हमसे, तो मैडम कैसे बात कर रही है या सर कैसे बात कर रहे हैं, राइट? ऐसा लगता है ना? Yes, honest confession. Yes. But let me tell you, teachers, you are all very generous, very good. Of course, good is a subjective term. You're very kind, very generous, very gentle. But many times people feel what the principal is doing is not right. हम कहते हो प्रिंसिपल है ना, जो भी बोलेगी सही बोलेगी, ऐसा नहीं है. You know the seat is a hot seat, right? जो आप सफर करते टीचर्स बच्चों के साथ वो हम सफर करते आपके साथ, because we are all dealing with human resource. And अगर all of us are ethically strong, the entire school is ethically strong. If all schools of Jamshedpur are ethically strong, then you know what the result will be like, right? If you feel what I've said is justified, kindly put a J in the chat box, please. Kindly put a J in the chat box if you feel what I've said is yes. Arpan sir, yes. Abha Kumari ma'am, most of you are writing here. Thank you. A person who has integrity can be trusted by all stakeholders, right? So अब देखते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, एथिक्स आपने जो लिखा
उसी का कंपाइल पिक्चर है ये, राइट? अब ये देखिए, इंटेग्रिटी तो हमने बताया. नाउ व्हाट इज एथिक्स? Ethics is actually derived from the Greek word ethos. It is the way of living. Okay? Ethics or integrity की कोई class नहीं. Oh wow! Somebody has put a heart, you know. And I'm a bio teacher. That kind of heart. The heart is the size of your fist, and it is not as pretty as you're showing. वो तो एक पान का पत्ता है. Heart is something else. So somebody's crying. I don't know why. So teachers, you are keeping me entertained. You're crying. Somebody shedding tears for what? No need to shed tears. We are all enjoying together. Somebody's clapping. Okay, good. So all the emojis, I'm like, oh, there's one hair running. The tortoise is maybe after that. Very good. So ethics जो है ना वो अलग नहीं है. There is no class. There's no subject. There is no paper for ethics. Ethics is a way of living, right? Ethics, this branch of philosophy, it involves human conduct and behavior. And where will the behavior come from? From within, right? So who will decide our behavior? Just 30 seconds to put the answer in the chat box. Who decides our ethical behavior or unethical behavior, moral values, honesty? What in ourselves? Which part of ourselves? Very close thoughts. Where do the thoughts come from? Heart. Heart तो एक pumping. Very good. A part of it is upbringing. Very good. देखिए माइंड किसी ने देखा नहीं है. माइंड इज अ साइकोलॉजिकल टर्म. हार्ट तो एक पंपिंग ऑर्गन है बाबा. इनर वॉइस, अंतरात्मा, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वॉइस. ये जो आप हमको देख रहे हैं तो हमारी बॉडी का गठन देख रहे हैं आप. व्हाट इज इनसाइड इज द सोल. soul gives the inner voice. Sushma Kumari ma'am, thank you so much. Inner voice. Ethics examines the rational justification. Inner voice बोल दिया. Yes, self consciousness, absolutely. Inner voice बोल दिया मतलब ये नहीं कि सिर्फ वैल्यू, सिर्फ philosophical, psychological. No, it is rational. It is justified, right? So let us all join hands together. At least in our city, let us. Somebody is doing this. What is the reason? You should put in the chat box. Why this? Everybody was doing this. Somebody is doing this. I don't know if they're not understanding or what they want. See, let us join hands together and stand as a team. Very good. Thank you. And stand as a team. Let all schools of Jamshedpur have ethically strong, morally upright, socially responsible citizens. What do you feel? ये संभव है? If it is possible, put a Y in the chat box. If not, put an N in the chat box. Listen to the questions. If all teachers join hands, all schools of Jamshedpur, and of course Pataliputra Sahodaya is all the schools which are there of the Patna zone, can we give way for ethically strong, morally upright, socially responsible children, citizens? Absolutely. So अब सबके पास energy है, zeal है, then nothing should stop us, teachers. Go ahead and start correcting people, start introspecting self, and start getting on the path of ethics, right? अप्लाइड मैथ्स आप लोग पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सारे स्कूल में अप्लाइड मैथ्स है, तो अप्लाइड एथिक्स भी होता है, राइट? अप्लाइड एथिक्स इज द एजुकेशनल प्रैक्टिस. अब कैसे करेंगे बच्चों को? हमने बोल दिया, आपने यस बोल दिया. हम सब एक साथ खड़े होकर बच्चों को एथिकली स्ट्रॉन्ग, मॉरली अपराइट बनाएंगे. सो टू एक्सेलरेट दैट अवेयरनेस प्रोसेस, बच्चों को एथिकल डायलेमा दीजिए. See, when we were students, our teachers made us work, right? They were asking us to get notebooks, they were asking us to mind the classes, they were making us think, making us do homework, they were deciding which event we will participate in. But अब क्या होता है? Parents decide करते हैं, right? Isn't it? Now the parents decide, my child should go for this. Even if my child is very good with English elocution, he should participate in singing. होता है ना? Not all parents, but few parents do. So बच्चों को decide करने दीजिए. There are burnouts, there are failures, people are running away, people are getting out of like dropouts. Why? Because the teacher and the parents, they put the burden on the children.
we think as parents, as teachers, that we are suffering. Let me tell you, teachers, students are suffering equally. हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, उनके पास शेयरिंग का कोई साधन नहीं है, तो वो गलत साइट में घुस जाते हैं. So let children decide, let children take their own decision, which has to be correct. Then the political practice of ethics is to establish conditions for exercising moral judgment, because that is concerned with the common good. You know what? Sab sochte hain, me first. It is not me first. If I have to think Jamshedpur first, SDSM first, right? And then comes myself, right? That is called politically ethically strong, right? Always think, हमेशा आप देखिए, बहुत जगह ऐसे होता है पार्किंग में, तो टीचर्स who drive 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स जो भी आप चलाते हैं, कैसी पार्किंग करते हैं, लोग रख के चले जाते थे, डोंट इवन थिंक हाउ द अदर पर्सन विल टेक आउट द व्हीकल. ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि नहीं आपके साथ, बताइए. जिसके साथ है कैपिटल आई लिखिए. तो those who face problem for incorrect parking of other people, you can put an I in the chat box. Let me see. Yes, Vijay Kumar sir. Okay, so many of you are Abha ma'am, Arya ma'am, Akash sir. I लिख रहा. ठीक है, ऐसे होता ही है. फिलोसॉफिकल प्रैक्टिस क्या है? इसमें आपको क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करना है. Human excellence. Excellence is not one day process, teachers. Human excellence means आपको, it is a constant process. Creative criticism. कैसे करेंगे आप creative criticism? What do you understand by creative criticism? Can anybody put in the chat box? In the meantime, I can sip some water. What according to you is creative criticism with respect to philosophical from inner voice? But what is it? What is it, madam? What is creative criticism? Criticism creative कब होगा? कैसे होगा? How can we do creative criticism? Instead of criticizing the person, we will give a solution for the wrong act done. If somebody wrote something, motivation, how to motivate in this case, Saraswati ma'am? When not wearing helmet, police giving roses. Oh God. Wonderful, Anand sir. अगर इसी तरह पुलिस रोजेस देते रहे तो बहुत लोग बिना हेलमेट के ही जाएंगे. ठीक है? Don't criticize a person, rather that's a good thing. I will follow. I will put in other sessions. What you have to do is criticize the act, right? Criticize the act and ensure that if you're not wearing an helmet, you put some. जैसे ये बहुत जगह करते हैं ना, लेकर जाते हैं, मूवीज दिखाते हैं क्या हो रहा है, जब अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा. So all those things can be considered. So there is ethically right is when nobody is watching you also, you do the right thing, right? अब दिखाते हैं values and ethics. Values and ethics represent what most of us put into practice, right? Ethics और values कैसे connected हैं? आप ethically बहुत strong दिख सकते हैं, लेकिन if you are not putting into practice, you tell your children, please be punctual. Please do your work yourself. Please ensure that you help others. And you walk every day, invariably walk late into the class. After you walk, you ask the children to go and get the textbooks. Right? Don't quit. Yes, absolutely. So we have to be the role model, right? Whatever we say, we have to put it into practice every day. Only then we say ethics and values have coincided. It's strong enough, right? The way we strive to work with our fellow employees, our clients, our partners will depict our values. So who are our fellow employees? The teachers. Who are our partners? The parents, the vendors. And who are our clients? The stakeholders, the children. ये सभी के साथ अगर हम उचित तरीके से पेश आते हैं, then it is values and ethics. Always put yourself in the shoes of others. Be the change you want to see. What you want other person to do with you, you must do the same.
आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको हर किस्म के प्रिविलेजेस मिले और जब आपकी बारी आएगी तो आप नहीं करेंगे. That is not ethically right. Okay? The spirit that enables us to do our job, that is the correlation between ethics and values, and our values have been framed by our culture, right? Our family values, educational values, cultural values. So please remember, हम जैसे value set करेंगे, we have tremendous parts, especially you teachers have tremendous parts, teachers. You are touching 300 to 350 or 250 families per day through the children. You are very powerful. What we do, it goes back to the different families. First thing, tell children to confess what mistake they do. एक कॉमन उदाहरण देंगे. आप बाहर खड़े हैं, क्लास के बाहर खड़े होकर दो टीचर्स कुछ डिसाइड कर रहे हैं असेसमेंट का. इतने में 4 क्लासरूम है, कोई एक में से सीटी की आवाज आती है. There's a whistling sound. And you go to the class, this class, who has done? क्या रिएक्शन होता है नॉर्मली बच्चों का? टीचर ही. Yes or no? Tell me yes or no? Yes. So, वो सिस्टम हटाए. बच्चों को इतनी आजादी दीजिए कि उनसे गलती होती है तो आपके सामने कन्फेस करेंगे. अगर आप उनसे गलती पूछने की हिम्मत करते हैं तो बर्दाश्त करने की ताकत भी रखिए. If you dare to ask, you must care to bear with. Very important, right? And when we do that, then the entire surroundings becomes positive. If the child commits an error and says, sorry teacher, I have done, there's every possibility that there won't be any errors beyond 2, 3, and then it goes on. But if some other child says and you go on asking, and sometimes the child may be right, sometimes, yeah, own a mistake, superb, who said that? That was my next statement. Who is so closely connected to me? Shalini Bharat ma'am. Own a mistake in a positive way. Wonderful. That is exactly what I was going to say. Thank you. I don't know if you have seen my paper, my slides print out, but you have done it. You have given it. So now all as public servants our values are molded by traditions of our democratic government system. So let's make positive use of it, right? What are the benefits of integrity? Yes. See, one I have given. Others you put in the chat box. We have 45 seconds for this activity. A workforce comprised of people with integrity is one where you can trust the staff to perform to the best of their ability. What are the other benefits of integrity? Put 1 or 2 in the chat box. Success, strength, wonderful. And what else? Success, strength, and one very important thing we are missing out. Okay, self-acceptance is also okay. What else? Trust. Yes, trust though I have already put. Makes you secure. Yes, trust is already on the team. Believe. Superb. Teamwork. Believe. And if there is ethic, career growth. Superb. Wonderful. Wonderful is not the word. Compassion. Okay. So wherever there is ethic, there's values. What is removed? What is eradicated? In an ethical system, what is removed? Anger, okay. Empathy is there, okay. Fear is removed, anger. Better, yes. Is it only dishonesty or kya? Dishonesty, distrust, everything put together. What do you say? What is that negativity? Everything put together. We are all teachers. Distrust, anger, honesty, all negative emotions put together. Emotions and depression, wonderful energetic section. Oh, thank you so much, ma'am. Everything put together, क्या कहते हैं उसे? जो ethics के बाहर है, वो उनको उसमें क्या है? जो ethics के अंदर है तो full of values, trust, सब कुछ आपने बोल दिया. जो जिनके पास ethics की कमी है, anger है, dissatisfaction है, सब moral values, unethical, very good. So what is unethical leading to?
अगर अनएथिकल अनकल्चर्ड लोग रहेंगे तो क्या होगा सोसाइटी में, स्कूल में, वर्क प्लेस में? तालियां बजेगी क्या? हेजिटेशन, नेगेटिव थॉट्स और डिस्ट्रैक्शन, chaos. मिक्की तिवारी मैम, chaos, so chaos से क्या होगा? Corruption, absolutely corruption. That is the word. Who has written it? Manisha Majumdar, madam. Corruption will not be removed. Corruption will generate if there is unethical. And if it is ethical, corruption will be removed. Wonderful. So one word for all these words. क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. Right? Many of you have written corruption after that. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Teachers, you are there with me. I thank you. I thank God. And I thank your principals, such wonderful and intellectual teachers. They do not compromise on ideals, cut corners, cheat or lie. एकदम नहीं करिए. देखिए, it is my personal experience. ये आपको honest confession करेंगे. I do not budge. I do not compromise with ethics. Right? I will not change my ethics. I may have to change my workplace. I may have to change my work. I may have to change anything, but no compromise with ethics. And अगर आप ethically strong है ना, तो परेशानियां तो आएंगी जरूर, लेकिन वो आपको छूकर ही चले जाएंगे. Right? So always remember, make our children strong. एक छोटे से झूठ बोल के उसके बाद truly agree. Thank you so much. Meenakshi ma'am, thank you. So we cannot afford to compromise with our ethics. और जितना जो कर्म हम करेंगे ना, उसके proportion में फल भी आएगा. अगर हम अपने कर्म से ज्यादा मांगेंगे, कोशिश करेंगे, तभी जाकर करप्शन, अनएथिकल प्रैक्टिसेस होंगी. So let's trust our work. You don't have to trust the principal's assessment for you. You have to trust your ability of working. और एक चीज आपको बता दे, this is my personal experience. I have always worked with ethics and I have received a lot. Thank God. See, अभी देखिए ना, आप ही ये देखिए, आप ही लोग किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं. महेश पंडित सर, वे थैंक यू. आप ही लोग जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, because I don't differentiate who is who. But I am doing ethically what is right. 4 बजे है तो क्या, सारे टीचर्स के लिए एक ही है. Yes, honesty harasses, never punishes. Thank you. And we have inconsistent code of values. Thank you, sir. किसी ने लिखा है, compliment दिया है. Wonderful session. Shiv Narayan sir, Abha Kumari ma'am, thank you so much. Actually, you people are so wonderful, man. The energy comes on its own. Right? Integrity maintains the unity of our culture. Why? So awesome likha kisi ne. Thank you. You are awesome. Integrity at workplace can strengthen relationships. जिस जगह में, जिस workplace में values है, integrity है, वहां सब खुश है. If you feel what I've said is true, put a T in the chat box, please. And only 15 seconds to put that T. If you feel what I've said is true, where there is integrity, there is a lot of peace and happiness around. T. Correct. Absolutely. Thank God. Thank your principals. They are so lucky to have such wonderful intellectual teachers. And let me tell you, teachers, you know, all of us know corruption can lead to scandals and shake the institution's reputation. Right? अगर आप इंटेग्रिटी है ना, आप उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे. कहते हैं ना, that place is not suitable for me. Normally teachers say this. Oh my God, that class terrible. हमने तो घर ही बदल दिया बाबा. उस बस्ती में कैसे लोग रहते, उस एरिया में कैसे लोग रहते. आप देखिए, अगर आप morally strong है, ethically right है, then you will find people of your kind. Right? देखिए ना, I plan. And what set of teachers, wonderful 400, 500 participants, everybody is rocking. Because I have trust that all the teachers who are attending, I'm genuinely thanking them and their principals. I'm genuinely thanking Shubhoshri ma'am. So when it comes from my mind, from within me, automatically you are reciprocating, right? You can put a capital R if what I'm saying is right. Yes. Sir, if you raise your hand, you have to put in the chat box. We cannot unmute you, right? आप chat box में डालिए ना, हम जरूर उत्तर देंगे.
Why is it important to have integrity in the workplace? देखिए, oh, thank you, Saraswati ma'am. Integrity promotes better leaders. It helps to foster positive work environment, and open work environment promotes an ethical approach to decision making. All of you teachers are leaders in your own areas, right? You are all leaders in your own areas. ये सच है कि नहीं देखना पड़ेगा. 1 second teacher, somebody has written, somebody has made my day. Arya ma'am or sir, jo bhi a good voice ma'am. And you know, I am suffering from pharyngitis. If you feel my voice is good, I think मेरे बीमारी तो दूर हो. अभी जो एनर्जी आ गई ना हमको, अभी कोई संकोच नहीं, हम आराम से आपके साथ बात कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मोटिवेशन. देखिए, oh, the best is that you're bilingual. करना ही है ना, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना है. एनकरेज, क्योंकि बहुत सारे हिंदी टीचर्स भी है. अगर हमारी हिंदी सही ना लगे कृपया क्षमा करें, बट आई विल ट्राई एथिकली. आई विल ट्राई. सो एनकरेजेस डाइवर्सिटी, इक्विटी, प्रमोट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट टीम्स, एंड बहुत कुछ. आपको डिसीजन लेना है, right? So if we are ethically strong, we don't have to think of taking decision. A doctor takes decision for a surgery, for a chemo, for a transplant. Some doctors take decision like this. यूं लेते हैं. The teacher takes decision for promotion, for detention, for remedial class, for achievers. The principal takes decision. अब बताइए तो कब decision लेना पड़ता principal को hot seat में? जरा देखें आप लोग कितने वाकिफ हैं. When does the principal have to take very difficult decision with respect for the teachers? बताइए. We have 30 seconds for this activity. When does the principal have to take a strong decision or a very difficult decision for the teachers? तो जितने भी अच्छे डिसीजन लेना टीचर्स को लगता है और अच्छा हो सकता था. ऐसा कौन सा डिसीजन होता है? द प्रिंसिपल हैज टू डिसाइड फॉर एवरीथिंग इन द स्कूल बाबा. बट एक डिसीजन जो टीचर्स के लिए होता है, जो हमेशा टीचर्स को लगता है all the time, it could have been better. Maybe ma'am did not see this. उनको तो हमारी कोऑर्डिनेटर, रिक्रूटमेंट नहीं मैडम, रिक्रूटमेंट तो कंपलसरी प्रोसेस है. थोड़ा आगे बढ़िए. रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है? नो साउंड. ये बाबा संचिता मैम, ट्रेनिंग, और क्या है? परफॉर्मेंस किसी ने बोला. हाँ, तो वो तो परफॉर्मेंस तो आपका है. लीव पॉलिसी एक है, और वेरी गुड अनुपमा मैम, लीव पॉलिसी. और एक बहुत अहम प्रोसेस है जो सब स्कूल में है. एंड आई एम कॉन्फिडेंट इंडिया एंड अब्रॉड सारे टीचर्स का एक ही प्रॉब्लम है. बताइए ना क्या है. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जब प्रिंसिपल को बहुत peers and managers big part in career growth? ओके, करियर ग्रोथ का तो स्किल गैप एनालिसिस, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. बट एक सिस्टम है जिसमें हमेशा देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट फॉर द प्रिंसिपल. इतने ओपनली बता दिया. और क्या? सैलरी नहीं हो तो मैनेजमेंट वाला बात. सिर्फ प्रिंसिपल और आपके, अच्छा एक और हिंट देते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स या आपके एचओडीज रहते हैं, और आप सिर्फ प्रिंसिपल को भी नहीं, एचओडी को भी ब्लेम करते हैं. अप्रेजल, ओके, उसके बाद का प्रोसेस है मैडम, अप्रेजल के बाद का प्रोसेस है. बताइए तो कौन सा प्रोसेस है? ओके, अभी बता देते, किसी ने नहीं लिखा, इंक्रीमेंट वगैरह लिखा है. यस, सब्जेक्ट एलोकेशन, एब्सोल्युटली सब्जेक्ट एलोकेशन. हमेशा टीचर्स को लगता है मैडम थोड़ा बायस हो गई, अरे मेरे एचओडी ने, मेरे कोऑर्डिनेटर ने बायस कर दिया. बट दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. बट let me tell you, all principals face tough time, because we have to see completely and then allocate the subject to you. Class allocation, subject allocation, absolutely, absolutely. So abhi ethically strong hoiye aur dekhiye kaise classes milte hain. अब आप बताइए तो, name some traits of leaders with moral values, right? उससे पहले, team, if I have convinced you, put a capital C in the chat box. If I've confused you, put a small c. Let me see how many capital C's are there. 1, 2, 3. Oh, all capital C's. मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं है, आप कन्विंस्ड है जो भी हमने बोला. ओपन शेयर सेटिंग्स है, ओके, शेयर किया,
कॉपी लिंक किया, अब हम क्या करेंगे, लिंक को डाल देंगे। यस, अभी आप इस लिंक को क्लिक करिए, आपके सामने एक पैडलेट आएगा, उसमें आप जो भी ट्रेड्स लीडरशिप का होना है, you are all leaders in your areas, teachers, I'm sure you know that, you agree with it. So some traits of leaders with moral integrity, लिखना शुरू कर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे वाह, ये तो बहुत डिजिटली स्मार्ट टीचर्स है पटना पाटलिपुत्र सहोदया में, सब फटाफट लिखना शुरू कर दिए हैं। माय गॉड, हमें तो लगा था 3-4 बार आई हैव टू रिपीट। यस, मौमिता मजुमदार मैम, डेडिकेशन सुपर। हाँ, अपना नाम लिखिए ना। अंडरस्टैंडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट आपका नाम ही नहीं लिखा है। My God, so many of you are attempting. Vijay Sinha sir, consistency very important. Pinakshi Verma ma'am, thank you. Understanding, जो भी डिवोशनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, प्लीज ये एक आप क्लिक पे लिंक करिए, ये ऐसे एक प्लस साइन आएगा, उस पे क्लिक, फिर से डाल दिया हमने लिंक, क्लिक करिए, उस पे प्लस साइन आएगा, उसमें लिखिए efficient decision making, seriousness, and yes, Renu Shankar ma'am with visionary, wonderful. Usha Kumari ma'am, honesty, difference between right and wrong नाम नहीं लिखा आपने, देखिए ना। yes, good communication skills, yes, wonderful, wonderful. link not working, एक बार और डाल देते हैं, now it will work sir, click करिए, it will work. and see this plus sign, इस पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो एक ऐसा डब्बा आएगा, that box you have to write your name, you have to fill. If you want to take a screenshot, you can take and keep, highlight your response, it will be so nice. वैसे आपको पता था, जब हमने भी ट्रेनिंग की थी ना, हमने भी यही किया था, सारे प्रिंसिपल्स लिख रहे थे और अब हमने ऐसा किया, प्रिंट आउट निकाला, उस पर हाईलाइट किया पेडागोजिकल लीडरशिप का, फिर हमारा भी रखा हुआ है। And it is so nice. After all, we are all from the teaching community. See, children from KG to PG have the same mentality. Teachers of India and abroad face the same problems. Yes, taking accountability, responsibility, absolutely, self-esteem. देखिए ना, आपने इतने अच्छी अच्छी बातें लिखी, लेकिन नाम नहीं लिखा है, cannot even acknowledge. खैर कोई बात नहीं, हम लोग ethical dilemma करेंगे तो पता चल ही जाएगा. What is it all about? Oh, Bapre, 14 of you are answering. I have to increase by 30 seconds. Somebody has written nice session, ma'am. Thank you, madam. Thank you, madam. Yes, sir. जिन्होंने भी लिखा है. Zahir Alam, sir. Thank you so much for the motivation and for the compliment. Even Nazib Azad, sir. Oh, Aditya Raj, sir. Thank you for complimenting to be energetic session, because you are energetic. Yes. Oh, wow. Some people have highlighted it. देखिए ना, कितना अच्छा, we learn from each other. Wonderful is not the word. Superb, superb, superb. जरा जल्दी वाइंड अप करिए, टाइम तो आप हो ही गया है, लेकिन फिर भी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ समय और देंगे ताकि फिनिश ऑफ। यू शुड एंजॉय, देखिए, यू शुड एंजॉय एंड लर्न। काम तो करना ही है, एंजॉय करके करते हैं, राइट? सेशन तो लेना ही है, अटेंडेंस तो देना है, सर्टिफिकेट तो लेने हैं, लेकिन लेट अस एंजॉय द सेशन, राइट? वंडरफुल, वंडरफुल. सेलिन जोसेफ मैम, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, जो लोग कर रहे हैं ना इसको, यू कंप्लीट. आई एम नॉट क्लोजिंग द पैडलेट, आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग इट. आप कंप्लीट करिए. इन द मीन टाइम वी प्रोग्रेस. यस, लेट्स एंजॉय मैम, यू आर राइट. किसने बोला? हु हैज रिटन दिस? यस, फैज इकबाल सर, थैंक यू. somebody is there with me. Yes, so let's all enjoy. What is the problem? स्कूल में तो आज कितना पढ़ाया आपने, कितने करेक्शंस किए हैं. सो इसको बर्डन मत लीजिए. सर्टिफिकेट आएगा तब क्या करेंगे, सर्टिफिकेट के लिए करना है तो अच्छा नहीं लगेगा. अगर आप, इफ यू एंजॉय द सेशन, क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या प्रश्न थे, देन मेनी न्यू थिंग्स. यस, थैंक यू, आई एम ऑल्सो लर्निंग अ लॉट, राइट? ओके टीचर्स, thank you so much. We go to the next slide, right? If you are writing the Padlet, continue, no problem. उसके बाद आप स्लाइड पे आइए.
Very knowledgeable session. Oh, thank you so much. So it is important to understand that values and ethics provide a framework for decision making and leadership. वो बहुत ज्यादा important है, ठीक है? एक और चीज देखते हैं, traits of leaders with moral integrity. They take accountability, responsibility for their action. They really admit when they are wrong. Please have the courage to go and say, sorry children, I made a mistake. You don't believe? You can ask my teachers, I do it. You can ask my children. ऐसा भी कभी कभी होता है कि I reach after the prayer starts. Okay? जब ऑनलाइन चलता था सीबीएसई का कुछ फोन आते थे, कुछ होता था तो लेट पहुंचते, फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज सॉरी चिल्ड्रन आई एम लेट टुडे. और एक बार आप बोलते हैं ना, दूसरी बार आप कोशिश करेंगे कि दूसरी बार सॉरी ना बोलना पड़े. यू पुट द नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर योर ओन. ये तो हर प्रिंसिपल का काम है, हर टीचर का काम है. टीचर्स मीन्स दे लिव फॉर अदर्स, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर लिविंग फॉर द सोसाइटी एंड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. हेतु हेतु मदभूत, अगर हम पढ़ते तो पास होती, राइट? सो बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दीजिए. कहीं भी लगे कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, आपको लगे कि बच्चा अवॉइड कर रहा है, तभी प्रॉब्लम शुरू होता है. अगर आपको लगेगा कि नहीं बच्चे ने पढ़ाई तो की थी, कोई सिचुएशन होगा नहीं दिया, then there is a solution, possible solution. Remain honest at all times and we have to be kind, reliable. Most important is humble, humility. जिस ब्रांच में जितने फल होते हैं वो ब्रांच उतना ही झुका रहता है. तो जो व्यक्ति में गुण है वो विनम्र रहेंगे ही, राइट? तो जितने आप देखिए जो अक्वायर्ड होते हैं ना, पैसे हो, पोजीशन हो, पावर हो, वो अगर अक्वायर्ड है तो ज्यादा दिन नहीं चले, लेकिन वो अगर इनबिल्ट है, आप देखिए ना, जिस डाल में जिस ब्रांच में ज्यादा फल है वो तो झुका है. अक्कड़ नहीं होना चाहिए. ईगो विद कैपिटल ई एंड अ रिकरिंग ओ. टीचर स्टूडेंट ईगो, कोलीग कोलीग ईगो, प्रिंसिपल टीचर ईगो, सब स्टाफ टीचर ईगो, सब जगह तो ईगो है. और जब बच्चे पैर छूते हैं ना तो उनका ईगो बेंट होता है. ये हमारे वैल्यूज में है बट हम भूल गए. एंड व्हेन द ईगो बेंड्स, नो, ऑल द ट्रबल्स गो बिहाइंड. क्यों बड़ों के ही पैर छूते, छोटों के क्यों नहीं छूते? क्योंकि ऑल द ट्रबल्स गो उनके पैरों तले निकल जाते हैं. आप देखिए, जब आपको कुछ कहीं इंटरव्यू में जाना हो, कहीं स्पीच देना हो, तो आप अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं, इन लॉज के पैर छूते हैं. So this is what is, ego will go down. Bend your ego. Ego रहेगा, problem होगी, right? So let's understand this. अब आप ethically strong तो हो ही जाएंगे. देखिए, ये किसी बोर्ड से, सीबीएसई का कहीं से साइट से आया है, किसी बोर्ड से बच्चों ने लिखा है कि एथिक्स के बारे में उनका क्या फीलिंग है. देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं? ऑनेस्टी एट ऑल टाइम्स. ये जो गुड़िया है ना, ये एक टिकट मांग रही है और ये जो मैडम बैठी है ना वो रियली बोल रही. क्यों पता? इसके अंदर 3 गुड़िया और है, राइट? जस्ट सी, दिस इज अ खास किस्म ऑफ, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ डॉल. देयर आर 3, एक के अंदर एक जैसे डब्बा आप लोग लेते हैं ना वैसे. एंड देन द person is asking for 1 ticket and then this lady is asking. So honesty to be depicted all times. And this is called Matryoshka doll, Russian dolls. The set of wooden dolls in decreasing size. अब देखिए, ये एक और सिचुएशन है कैल्विन एंड होब्स का. आई रेड दिस एथिक्स बुक, यू गॉट मी. ठीक है, बच्चा कहता है, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? It really made me see things differently. It's given me a lot to think about. And the teacher says, I'm glad you enjoyed it. And then what the child is saying, it's complicating my life, don't get me anymore. जिस दिन हमारे यहाँ ऐसे होंगे ना, सारे values दब जाएंगे. So ethics should not complicate. Up, point to ponder again. What do all these definition statements have in common? Is integrity something that one can impose on someone else? Certainly not. Right? You can yourself think. Give an example of unethical behavior you have come across. Is adopting to unfair means during exams a case of unethical behavior? If yes, why? इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो आप क्लास में बच्चों को अच्छी तरह समझा पाएंगे, आप उनको लीड कर पाएंगे, राइट? इसके उत्तर तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. वी आर टीचर्स, वी ऑल नो व्हाट द आंसर बी. एक और देखते हैं, राइज ऑफ
चीटिंग कल्चर, अभी देखिए ना बच्चे कितना नेट से कॉपी करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में. टीचर्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया फेस दिस. प्रश्न अगर एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है फिजिक्स का, तो बच्चा केमिस्ट्री का उत्तर लिख देता है क्योंकि नेट में वैसा है. Blatant breaking of rules to get ahead academically. Sometimes it involves violation of laws also. Right? People who are in the respectable position, the parents themselves say, copy karo beta, copy karo, pass karna hai. ये सब पॉइंट्स आप सोचिए, तब आपको लगेगा कि एथिक्स कहाँ है. ये देखिए, some people feel it is cool to be unethical. जब तक चलता है चलने दो. People talk like this. Yes, ma'am, you're right. Yes, all of us face the same situation. So what is he saying? Lately I have been feeling ethical. Can you prescribe something for that? इतने unethical practices में घिरे हुए हैं कि कभी-कभी ethical लगता तो उनको लगता कुछ गड़बड़ तो नहीं है. Is there anything wrong that I'm feeling ethical? Is there anything wrong I'm feeling concerned for the other person? So this is what is point. Every unethical practice has its consequences. ये चीज बच्चों के दिमाग में घुस जाना चाहिए. जिस तरह आपके दिमाग में अभी जा रहा, प्लीज बच्चों के दिमाग में डालिए. See, these are the newspaper clippings. Who is to be blamed? Systems or individuals? This is a question for you teachers. It's a question for all of us in the schools, for the entire education system. Cyber crimes can be nailed. What's important is getting ahead. Cheating is a shortcut. It's a pretty efficient one in a lot of cases. This is, I am not saying the cheat has confessed it. They're writing confessed cheater, it's actually cheat. Dekhiye. So these are some of the things we have captured from the CBSE site. Like in the previous case, how would you feel if your choices or actions were in the front page? बच्चों को बोलिए इसका उत्तर लिखिए. आप भी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए ना, कभी उत्तर लिखिए बैठ के, सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे. So let's see if you are ready for some activity. ये आपको बता दे, चीटिंग इज अ क्राइम अंडर लॉ. ये तो आपको पता है इंडियन पेनल कोड का कौन से धारा में आता है. What are the benefits, if any, of cheating or any other unethical practices? What are the risks of being involved in any unethical practices? Does an unethical act by one person harm many others? And who has the responsibility for maintaining ethics in you? इसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए. तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई भी एक प्रश्न का उत्तर. How can I generate attitude? You have to cultivate, sir. You have to feel and cultivate, and then it becomes a practice. Attitude is from within, inner voice. Who has the responsibility for maintaining ethics in you? Any teacher can put the answer in the chat box. Fast, we have to do some more slides. We ourselves, our inner voice, wonderful, Chandrani Chaudhary ma'am, everybody is writing that. अब देखिए ethics का ladder, 5 steps to ethical decision making. You as teacher, recognize the ethical issue, get the facts, evaluate alternative actions, what is right, what is wrong, make a decision and test it, and then act and reflect on it. When I joined as a teacher, roll number 12 writes the answer. इतनी सी जगह खाली है और बच्ची लिखती है आंसर इन द लास्ट पेज. रोल नंबर 36 तक पहुंचे, उसमें एक सेम आंसर्स, नीचे जगह नहीं है तो बच्चा लिखता है आंसर इन द लास्ट पेज. I went back to roll number 12. Excuse me. I wrote copy with sense. Right? So बच्चों को बताना है. अगर आप उसको 0 दे देंगे वो कभी नहीं समझ पाए. हमेशा समझाइए क्या है कॉन्सिक्वेंसेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है एथिकल डायलेमा, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आता है अगर 2 इक्वली बैड चॉइसेस रहते हैं. राइट, वी फेस इन आवर लाइव्स. अब कुछ एथिकल डायलेमा के एक्सरसाइजेस करते हैं. आर यू रेडी? इफ यू आर, पुट एन आर इन द चैट बॉक्स. ऑल दोज हु आर रेडी, पुट एन आर इन द चैट बॉक्स. जब तक आर नहीं आएगा हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे. यस, absolutely, absolutely. देखिए, the person can choose to divert the tram for the main track, saving 5 people on the track but killing the worker on the other track. अगर आप इनके जगह होती तो क्या करते? आपके पास एक ही बटन है,
या तो आप 5 लोगों को बचा सकते हैं जो खड़े हो हैं, या फिर आप एक ही जन को बचा सकते हैं, और कहीं वो एक आपका अपना हुआ तो, राइट? If this happens to be your own, what are you going to do? You have option of one button, either left or right. Yes. You will, you don't know उस समय क्या होगा. If you're ethically strong, even ethically strong people, they stumble, fumble. Right? और अगर आपने सभी ने लिखा 5 all 5, अगर वो आपका रिलेटिव हो तो तब क्या करेंगे? Yes. एक और देखते हैं. Imagine you're a doctor and you have 5 patients who all need transplants in order to live. 2 each require 1 lung, another 2 each require a kidney, and the 5th one needs a heart. In the next ward, other individuals recovering from broken legs. But other than that knitting bones, they're perfectly healthy. So would you kill the healthy patient and harvest their organs to save 5 others? सोचिए. No, yes. तो क्या करेंगे? As a doctor, आप उनको कैसे बचाएंगे अगर वो बहुत important हो गया है तो? How will you save them? You are a doctor. You're not a teacher. सोचिए. These are for you to think. इसके कोई सही गलत उत्तर नहीं है, इसके सिचुएशनल बैरियर्स है. ये देखिए, यू आर बैकिंग योर कार इनटू अ टाइट पार्किंग स्पेस इन द मॉल. सब जगह भी मॉल है, जमशेदपुर में है, पटना में है, सब जगह है. यू एक्सीडेंटली स्क्रैप द नेबरिंग कार पार्क. यू डोंट नो हुज कार इट इज, नोबडी सॉ यू मेकिंग दिस मिस्टेक एंड देयर आर नो सीसी कैमरास. आप क्या करेंगे? जाके बताएंगे उसको कि सॉरी भाई साहब, सॉरी मैडम, लग गया का गाड़ी? ऑनेस्टली बताइए तो आप लोग कितने जन बताएंगे? नो. यस मोनिका मैम, मोनिका मेनन मैम, नोबडी सेज दैट. ये तो ऑनेस्ट कन्फेशन, राइट? पर हम डरते जरूर हैं. आई फील वेरी स्केर्ड. मेनी ऑफ देम से नेवर. आप तुरंत तुरंत भागेंगे, है ना? वही होता है. What will you do? Will you leave a note giving your name and contact details, taking responsibility and offering to take care of the damage? We don't know. That is the question. अब एक बच्चों के नजरिए से देखिए. What if you are appearing for board exams, your classmate tells you that he knows people who will try and access the question papers for 2 subjects. He offers the papers to you at a price and he says that he has ensured all security, nobody will come to know. You are not very good at those subjects. If you get these papers, what will you do? बच्चों से पूछिए. बच्चों को इसी तरह के सिचुएशन दीजिए. The world is getting corrupt. We have to train our children. रामकृष्ण को परमहंस क्यों कहा गया है? रामकृष्ण परमहंस कहते ना. कोई तो ऐसा नहीं कहता है कि दिस लेडी परमहंस या मौसमी दास परमहंस या कोई परमहंस नहीं. बिकॉज हंस के टंग में ना सिट्रिक एसिड होती है. takes the proteinaceous part of the, thank you Sanjeev Kumar Jha sir, proteinaceous part of the milk and leaving behind the water. उसी तरह बच्चों को बोलिए सोसाइटी में अच्छी चीजें भी हैं बेटे. टेक अवे ऑल द गुड, लेट द बैड गो बैक टू द सोसाइटी. और ऐसा मत सोचिए जिस तरह कंप्यूटर में हो रहा ना, हम बटन क्लिक करें दूसरा स्लाइड आ रहा है. इट विल नॉट बी लाइक दैट. इट विल टेक मंथ्स एंड इयर्स. Right? Somebody is writing amazing session, ma'am. Thank you so much. What if you have just appeared for the first paper of your board exams? You have 3 days to prepare for the next. Your friend calls up to inform you about a YouTube link. And he informs you that a group of friends are meeting at his place and फिर exams के लिए बहुत social media में questions आएंगे. बच्चे क्या करें? पूछिए बच्चों से, what will you do? These are some of the questions. ये तो हमने कुछ किया है. आप अपने तरीके से अपने बच्चों के हिसाब से करिए. Who has the most potential to create a positive effect on a student's ethical standard? इसका उत्तर दीजिए. Before we wind up, we want the answer for this. Who has the most potential for topic is thanks ma'am. अरे इसका उत्तर दे दीजिए. Write the answer. I am not teacher. It's only teacher. No, it's parents, peers, teachers, celebrities, media, community as a whole. But remember, parents, teachers and friends form major part of the community. बच्चे अगर इस तरह से बाल काट के आते हैं, इधर से काटते, उधर से काटते, nonsense they do only because they see the celebrities and think उनको भी ऐसे लगे. कितना corruption हो रहा है. But we can help our children. If we want, if you want, I want, we can help. Right?
देखिए एक है, hope do you think our morality is defined by our action or by what in our hearts? I think कितना अच्छा उत्तर है. I think our actions show that all that's in our heart, right? कितना अच्छा है. देखिए टीचर्स का क्या काम है. Teachers learn from the ethical examples they set, and peers, someone hard working, creative and free thinking, can become a peer role model, right? A school teacher asked a little boy what his father did for a living. The boy, you know what the boy replied? I'm not sure, but I guess he makes pens, pencils, light bulbs, toilet rolls, etc. because this is what he brings home every day in his lunch box. पता चला क्या हुआ? उसके पेरेंट ऑफिस से ही सब लाते थे. So what does this depict? ये लास्ट पैडलेट है, 1 मिनट है पैडलेट उत्तर देने के लिए. प्लीज लिखिए तो वी कैन. देखिए ये ना बहुत वास्ट टॉपिक है. इसके लिए आया नहीं? हाँ आ गया लिंक. इस पे आप उत्तर दीजिए तुरंत. जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए. और 2-3 फ्लाइट्स है, वी कैन फिनिश ऑफ. Are you enjoying, team? Y for yes, N for no. Are you enjoying? Yes. Thank you. Thank you. So I can take a minute or two extra. Only if Shubhoshri ma'am allows. Unethical upbringing. Yes, absolutely. पर नाम तो लिखिए ना. इतने अच्छे अच्छे उत्तर देते हैं आप लोग, नाम नहीं लिखते हैं. See, most of you are answering. Please keep answering. Let me go to the next slide. When they see their mentors, like when the children see the mentors doing wrong, they are disappointed, they lose respect, and that breeds acceptance and acceptance in them. So we have to be very careful while dealing with the students. देखिए बच्चों के दिमाग में क्या होता है. ये बच्चों के साथ इंटरेक्शन. आई एम ऑल्सो अ काउंसलर. बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, उनके रिस्पॉन्स डाले. इसमें प्री एग्जाम स्टेज में क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है, सो एंग्जाइटी होती है, अपने आप में बातें करते हैं, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस या तो सही होता है या गलत होता है. ड्यूरिंग एग्जाम स्टेज में issues to be handled is cheating or hunting for help and urge to get support from the invigilator by bribing them. ठीक है, उनको बताइए कॉन्सिक्वेंस क्या है. आपको एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा, आपके स्कूल को मार्क कर दिया जाएगा. अवेयरनेस डालिए उनमें कि क्या करना है. So the key takeaways, I have just compiled the key takeaways. Academic integrity has to do with educative, preventive and disciplinary acts, right? अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है देखिए, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में आपको चूज करना है. द चॉइस इज योर्स एंड इफ यू चूज द चिल्ड्रन विल चूज. Integrity is the quality of having strong ethical and moral principles. A person with integrity acts with honesty, honor, and truthfulness. Right? It is a valuable skill that indicates people will perform to the best of their ability. Right? So this is all I had to say, teachers. Whatever you have to put, you can put in the chat box. Acknowledgement for the Google images, better appraise, upholding ethics and integrity from CBSE. ये तो CBSE से ही लिया है. And the final takeaway is, I hope you live a life you're proud of. If you find that you are not, I hope you have the strength to start over, all over again. I am not saying Scott Fitzgerald had. Right? So now the most important slide, सबसे important slide. Right? Thank you, Subhoshri ma'am. Thank you, principals, teachers, and the principals. Just give me 5 minutes to copy down the chat responses. I took 2 minutes extra. I apologize sincerely, but the responses have been superb, so I could not control giving them extra time, though every minute was planned. Thank you. Thank you once again. Just give me 5 minutes. Thank you, ma'am, for your wonderful session.